Greetings, my affectionate students of class 7th. This is our lesson 3rd Inexperienced Ghost. In this video, we will learn our question answers with full bag exercise. Means to say, in this video, I will tell you what is the answer of the question and as well as a full bag exercise also. So let's start this one. The very first is there, pick the most appropriate option. The first is there, Evans shouted because he. Why he was shouted? Because he was excited by the idea of a ghost. So D option is correct there. Second is the ghost had come to the club because he. Why had the ghost come there? The ghost came there because he thought it would be fun of haunt. Okay, so B option will be correct there. Next is the third. The ghost could not disappear as he had forgotten the last moves. Means he had forgotten his gestures, that how to disappear there. So D option is correct there. Wish was pretended because why he was pretended? Because he felt Clayton's move would make him disappear. So A option is correct there. And next is their question answers. The mess he had made of haunting had scented his terribly. Who had made the mess of haunting? Who had made the mess of haunting there? Obviously the ghost had made a mess of haunting. He did it because he did it with the series of gestures and movements with the hands. Means the ghost had made a mess of haunting. Mass means somewhere garbage also, and mass means here maintaining of equal social status. Okay, and haunting means here to leave impression or to attract somebody. Means the ghost wanted to attract the people. He wanted to attract the people by maintaining his social status, that yeah, he is actually a ghost, but he had not experience of haunting or experience of ghost life. Okay, he did it with the series of gesture. And how he wanted to show like this there, he was showing this one with the series of the gestures and movements. मीन्स अपने हैंड्स की मूवमेंट से, अपने जेस्चर्स से, अपने लेग्स और हैंड्स की मूवमेंट से वो ये दिखाना चाहता था कि वो जो है वो बहुत ही टेरिबली जो है वो लोगों को डरा भी सकता है, और सेकेंडली वो घोस्ट की तरह डिसअपियर भी हो सकता है. विच आर रिक्वायर्ड टू मेड फॉर डिसअपियरेंस. मीन्स हैंड्स की मूवमेंट वो उपयोग कर रहा था यहाँ पे, वो हैंड्स की मूवमेंट करके अपने आप को डिसअपियर करने की कोशिश कर रहा था. ही वॉज सैड बिकॉज ही थॉट हंटिंग वुड बी फन. अब वो ऐसा क्यों कर रहा था, वो सैड क्यों हो गया यहाँ पे, वो बहुत ही अपसेट हो जाता है यहाँ पे, बिकॉज ही थॉट हंटिंग, क्योंकि उसने पहले क्या सोचा था कि जो हंटिंग है, हंटिंग मीन्स किसी को डराना, किसी को अट्रैक्ट करना, अपने इंप्रेशन में लेके आना, वो क्या था, एक तरह से फन था. But now he is unable to come out of it. Means but now it was impossible for it to come out from this kind of grip. Means starting में जो घोस्ट था उसने अपना इंप्रेशन छोड़ने की पूरी कोशिश की यहाँ पे. He did it with the seeds. वो कैसे कर रहा था, वो अपना इंप्रेशन लोगों पे कैसे छोड़ने की कोशिश करता है यहाँ पे. ऑब्वियसली वो सोचता है कि अपने हैंड्स की मूवमेंट करके, अपने जेस्चर्स मतलब फेस एक्सप्रेशन चेंज कर करके, जैसे कहते हैं ना कि घोस्ट जब डिसअपियर होने लगता है तो अपने हैंड्स की मूवमेंट करने लगते हैं, तो सेम वो भी घोस्ट यहाँ पर करता है. बट वो जो स्टार्टिंग में इसको बहुत इजी सोचता था, बट क्या होता है वो अपसेट हो जाता है, वो सैड हो जाता है. वो सैड क्यों होता है? बिकॉज ऐसा करना वो पहले सोचता था कि फन है, बट अब उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, बिकॉज ही फॉरगोट हिज जेस्चर्स एंड मूवमेंट ऑफ डिसअपियरिंग. ओके, बी इज देयर. क्लेटन सेड आई, you are a very good lawyer. Why the Clayton spoke like this? Clayton ने ये क्यों कहा कि तुम बहुत अच्छे मतलब झूठ बोलने वाले पर्सन हो? क्यों कहा उसने? Why did the narrator say this? Narrator, why did he say this? The narrator said this because he was not convinced with the disappearance of a ghost with the gestures and movements of hands. उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसको बिलीव ही नहीं था कि हैंड्स की और अपने जेस्चर्स की मूवमेंट करने से कोई भी इस तरह से क्या हो सकता है, डिसअपियर हो सकता है. तो इसलिए उसने ऐसा उसको कहा था कि तुम बहुत बड़े लॉयर हो, झूठे हो. ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट्स के स्पेलिंग को ध्यान रखना.
एक होते हैं मूवमेंट, MOMENT, मूवमेंट वो होता है अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, जो एक पल होता है उसको बोलते हैं। ये मूवमेंट होती है उसकी, जो मूव मूव करना, किसी चीज में मूव करना, कोई मूवमेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं मूवमेंट। ओके, मतलब कि हलचल जो होती है, हिलाना अपने हैंड्स को जो है उनको, बॉडी लैंग्वेज को यहाँ पर यूज करना, उसको बोलते हैं मूवमेंट। जैसे मूव होता है बढ़ना, आगे बढ़ना, मैंट्स मतलब मूवमेंट्स किसी चीज के लिए, मतलब अपने हैंड्स और लेग्स को यहाँ पे यूज करना मूवमेंट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज देयर थर्ड, द सॉर्ट इज नॉट गोइंग टू स्नैच Clayton into the world of darkness. Who says this and why? Who says this? Obviously, Ivan. Ivan said this because he might be interested in seeing the movement. Means इवान ऐसा क्यों बोलते हैं? इवान ऐसे बोलते हैं क्योंकि उसको थोड़ा सा, ही माइट बी इंटरेस्टेड, शायद वो इंटरेस्टेड था, माइट बी इंटरेस्टेड मीन्स शायद वो इंटरेस्टेड था इन सीइंग द मूवमेंट्स, की वो भी मूवमेंट्स देखना चाहता था घोस्ट के, मेड फॉर डिसअपियरेंस, की वो कैसे डिसअपियर होता है। ही डिडंट बिलीव दैट क्लेटन इज गोइंग टू डिसअपियर जस्ट बाय डूइंग द मूवमेंट्स, और उसको बिल्कुल भी बिलीव नहीं हुआ कि क्लेटन जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, क्या करते हुए? अपने हैंड्स की मूवमेंट को यूज करते हुए। ओके, नेक्स्ट इज देयर डी। इन द डी फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन देयर, हाउ डिड क्लेटन कन्विंस हिज फ्रेंड्स, how did he convince his friends that he had seen a real ghost? How did he convince their, yes, Clayton convinced his friends that he had seen a real ghost by demonstrating the art of complicated movements and series of gestures with the hands. By doing that, the ghost has disappeared. यहाँ पे जो क्लेटन है वो कन्विंस करने की पूरी ट्राई करता है, वो बहुत ट्रस्ट मतलब बिलीव करवाने की पूरी ट्राई करता है अपने फ्रेंड्स को दैट ही हैड सीन अ रियल घोस्ट बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग। डेमोन्स्ट्रेटिंग मीन्स वो करके दिखाता है, वो सारी चीजें ऐसे ही एज इट इज करके दिखाता है, कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स को करके दिखाता है, बड़े कॉम्प्लिकेटेड से मूवमेंट्स वो यहाँ पे करके दिखाता है जैसे कि घोस्ट ने उसके सामने किए हों, ठीक है। वही सारे जेस्चर्स, वही हैंड्स मूवमेंट्स को वो करके दिखाता है, like the ghost was doing there before him and the ghost was disappeared. Means he was just demonstrating. Demonstrating means he was giving the live example before his friends to convince them. Next is there, did Clayton help the ghost? Did Clayton help the ghost find his way back? हाउ मीन्स क्या क्लेटन ने हेल्प की, उसकी घोस्ट की हेल्प की, उसका वे फाइंड मीन उसको दोबारा से वहीं पे जाने के लिए, वो जो भूल गया था, वो जो फॉरगॉट हो गया था, वो अपने जेस्चर्स और मूवमेंट्स भूल गया था जो घोस्ट, क्या उसने उसकी हेल्प की एंड हाउ और कैसे की? यस, क्लेटन एनकरेज घोस्ट बाय ट्राइंग टू डू द सीरीज ऑफ जेस्चर्स एंड हैंड्स मूवमेंट बाय हिमसेल्फ। यस, क्लेटन ने उसकी हेल्प की थी, उसको एनकरेज भी किया था घोस्ट को, क्या करते हुए? उसने खुद डेमोन्स्ट्रेशन दिया था कि यस, जब आप यहाँ पे आए थे, यहाँ पर मेरे सामने अपीयर हुए थे, तो आपने ऐसे ऐसे जेस्चर्स किए थे, ऐसे ऐसे अपने हैंड्स के मूवमेंट्स किए थे। मींस ही वाज डेमोन्स्ट्रेटिंग बिफोर द घोस्ट आल्सो दैट हाउ वाज ही अपीयर्ड बिफोर हिम। मींस ही वाज हेल्पिंग हिम, ही वाज एनकरेजिंग हिम। नेक्स्ट इज देयर, व्हाट डू यू थिंक हैपन इन द एंड? व्हाट डू यू थिंक हैपन इन द एंड? Was the whole thing a joke? क्या ये सारी चीज बिल्कुल मजाक थी? Did something really happen? क्या ऐसा कुछ हुआ था? क्या यहाँ पर घोस्ट एक्चुअल में था? Did Clayton disappear or did he wake up? क्या यहाँ पर क्लेटन जो है वो डिसअपियर हो गया था सबके सामने, या फिर उसकी नींद खुल गई थी? Yes, what do you think? We think that whole thing was just a narration of a dream. Miss वो just अपना सपना सुना रहा है, यहाँ पर अपना ड्रीम सुना रहा है, यहाँ पे अपने ड्रीम को नरेट कर रहा है। इन द एंड क्लेटन वक अप, और एंड में क्या होता है कि जो क्लेटन है वो नींद से जाग जाता है। ओके, द नेक्स्ट इज देयर, we laughed and Clayton looked offended. Yes, he looked offended. Offended means insulted. Why was Clayton offended by their laughter? उनके laughter, उनके हंसने से वो क्यों offended हो जाता है, क्यों वो insulted feel करता है? Yes, Clayton was offended. Clayton जो था वो यहाँ पे क्या करता है? Offended means वो क्या करता है यहाँ पे? Insult feel करता है by their laughter, उनके हंसने पर, as he realized that they didn't believe on him, क्योंकि उनको पता चल गया था कि उसने वो जो भी घोस्ट के जैसे यहाँ पर बनाने की कोशिश कर रहा
है, ऐसे जो है वो कोई भी इसके अंदर रियलिटी नहीं थी, ठीक है। एज ही रियलाइज, उसको रियलाइज हो गया था कि उसके ऊपर किसने भी बिलीव नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर सम लिटिल थिंग दैट हैज स्लिप्ड मी एंड आई कांट गेट बैक। स्लिप्ड मी हियर मीन्स स्लिप्ड फ्रॉम माई माइंड, माइंड से स्लिप हो जाना, माइंड से निकल जाना, दिमाग से किसी बात का बिल्कुल निकल जाना, भूल जाना। What little thing had been forgotten by the ghost? अब यहाँ पे ghost क्या भूल चुका था, क्या भूल गया था? Obviously the ghost had been forgotten his gestures and hands movements. वो अपने वो gestures भूल गया था, वो अपने वो hands movements भूल गया था, जिनको करके कि वो वहां पर उसके सामने अपीयर हुआ था। जैसे नॉर्मली आपने जो हॉरर सीन्स या हॉरर मूवीज देखे होंगे, उसमें जो घोस्ट है हैंड्स की मूवमेंट करके बड़े हॉरर सा सीन करके तब हम सबके सामने अपीयर होते हैं। एंड द सेम दिस घोस्ट वाज आल्सो डूइंग दैट। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज देयर, आई सेड in a tone of friendly superiority. Friendly superiority means there, what do you mean by this one? What does friendly superiority means? What do you think? Clayton spoke like this to the ghost. What do you think? Friendly superiority means socially display a sense of better than others. अपने आप को friendly nature रखते हुए sociably और gregariously अपने आप को क्या करना, दूसरों से better अपने आप को show करना। Clayton spoke like this to the ghost as he considered him inexperienced ghost. क्लेटन ने ऐसा बोला था, ऐसा इसलिए क्या था क्योंकि उसने क्या कंसीडर किया था कि जो घोस्ट था वो इनएक्सपीरियंस्ड था, उसको कोई एक्सपीरियंस था ही नहीं यहाँ पे। ओके, एंड द नेक्स्ट यू हैव टू पंक्चुएट these sentences correctly. First is there, we can see ghost in that house, full stop. You will write full stop at the end of the sentence, and first W is already capital. Next, second is there, can we see ghost in that house? Means now you are asking question, so you will put a question mark at the end of the sentence, and C is already capital. Third is, when do we have monsoons in India? Means you are asking question, so you have to put here question mark. Next is there, do we have monsoons in India? Again we have question, so we will write question mark. This is a good place to start. Simple sentence, so only full stop will come at the end of the sentence. Is this a good place to start? You are asking question, so put a question mark at the end of this sentence. Are you going to Shimla for your holidays? Question, then again put question mark. I'm going to Shimla for my holidays. You are answering, then only full stop you will write there. And now there is given WH family, with the help of which you always make your sentence interrogative, in which you always ask a question. When always show you the time. For time, you always use when word for time, for asking the time. Who will show you about the people, about the living things, about the people. Why is there reason? It means if somebody is asking you the question of why will give you the reason. Means if they're asking you something in why, you have to give the reason of the thing. Next is the how means for more detail, means you have to give more detail that how the incident happened there. What means for things, what are those things there. Where you will use for the places, means where he has gone there, so you have to tell the place name in the answer. And which, if somebody is asking you the question in which, then means to say for choice between things, you have a choice, some things will be given to you, out of which you have to choose one there. Okay, so means to say there is given the meaning of every question word, every WH family word, why we are using these kinds of words, why for making sentence, for making a question, interrogative sentence. So what are we using? When we use for time, who we use for people, okay, why we use for reason, how we use for more detail, for telling more details, what we are using for the things there, where we are using for the places, and which means we have choice, we have to select one there. So there is given what, there is given why does she paint, means you have to tell the reason that why does she do paint. Where is where is he going, where means they are asking you the place name. And what will they eat, what means they are asking you the thing there, that what thing is she eating or are they eating. So like this you will make the question and you will understand the sense of this one. The next is there, in the dark blue thing, I have written the answer there, like Renu replied there,
Oh, last week we went to Ooty. So what question will be there? Where did you go last week? Okay, next is given the answer Renu. It was beautiful. My grandparents lived there. So what will the question of this one? How was it? Who lived there? The next is given we drove there. Drove is the second form. Drive, drove, driven. Okay, so how will be the question? Who did drive there? Okay, so drive is the first form, and with did we always use the first form. That's why you have to write who did drive there, and did is given the question. So in the answer what is written, second form is given in the answer. And the next is there, well, yes, a haunted house was something interesting that we saw. So the question will be there, how was it? What was interesting there? And the next is no, we didn't see any ghost. So the question will be, did you see any ghost there? So like this will be the question there. And your last question is there, you have to give the answer, match these things. As free as a bird, bird is free to fly in the sky, so as free as a bird. Next is the, yes, fierce means they're violent or aggressive or angry. Okay, so fierce means who is dangerous there, who is aggressive, who is angry, a tiger. Okay, so what will the answer there, as fierce as a tiger. Next is as graceful as a, yes, as a gazelle. Okay, as a gazelle. And what do you mean by gazelle? Gazelle is a small, beautiful deer. Deer means here heron. Okay, so a small, beautiful deer means their gazelle. Right? Next is there as dead as. As dead as means there, yes, the dodo. And dodo is there. What is dodo? Dodo is an extinct flightless bird. What do you mean by extinct flightless bird? Means a bird who couldn't fly. Okay, who can't, the bird which can't fly there, that bird is known as dodo, and this kind of species is not find this time. Okay, so this is extinct means there, this kind of bird is not available now in this century. Okay, this is extinct. This is extinct. Okay, extinct फ्लाइटलेट बर्ड्स मीन्स ये बर्ड पहले होता था, अब ये बर्ड नहीं होता है, इनकी जो स्पीसीज अब यहाँ पर आजकल जो वो दिखाई नहीं देती. ठीक है, तो ये कौन सा बर्ड हुआ, extinct flightless bird, doo. Okay, the next is given there, as gentle as a lamb. As gentle as a lamb. And lamb is there, what is lamb there? Lamb is very kind and never become angry. This is this is kind of animal there. So this animal is very kind and never become angry. So we are saying as gentle as a lamb, and as happy as a lark. What do you mean by a lark? Lark is a small brown bird that makes a pleasant sound. Okay, so what is lark? Lark is a bird, is a small brown bird that makes a pleasant sound. Okay, so these were your matches. Like this, I have solved all the question answers as well as your back exercise. I hope everybody would like this video. If you would like this one, you can subscribe the channel to watch my other videos also. Okay, and you can give the comment also if you like. Thank you so much for watching the video. Have a nice day, everybody.